Hello everyone, welcome to my channel. My name is Love. If you're new here, I'm Love and I post videos, a lot of informative videos regarding Canada visa, Canada immigration, and I will be posting a lot more videos regarding my entire journey to Canada. So guys, if you're new here, please do subscribe and be a part of my channel and my journey, as well as be a part of my family, because I consider all of you guys watching this as my family too. So I would really appreciate if you guys subscribed and liked my videos. So in today's video, I will be talking about a really important topic. As you can already see from the headline, it's basically I will be discussing what documents you would need to carry to the airport when you travel to Canada. If you're looking to travel to Canada anytime soon, could be next month, next week, or even tomorrow, so this video is for you. And after COVID-19, a lot of rules and regulations have been changed. There are regular updates, new rules for those who are looking to travel to Canada. So in this video, I will try and cover the most important documents that you definitely need with you to carry when you travel to Canada, and the documents that they will ask at the airport. So guys, make sure you watch this video till the end so you don't miss any of the document. If you have any other suggestions, any other document that you think I might have missed, you guys can comment down below and I'll pin your comment for other viewers to see as well. Also, in today's video, I will be making it into two parts. So the part 1 video is this one, in which I will be discussing all the documents. So the part 2 of the video would be also an interesting one. So in that one, so basically what I'm going to do is I will either contact one of my friend or even my sister who recently traveled to Canada a few weeks back. So I will do like a Q&A session or an interview with her, in which I would be asking her a few questions about her airport experience after the COVID-19 time and rules, and what were the officers asking. And because she traveled as a student as well, so I would be asking her questions, what the officers were looking for in the documents, what documents did they ask, were they stopping, were they deporting students, etc, etc. So guys, keep your notifications on, and I would be posting that video really soon, in around 1 to 2 days, so you would be notified. And if you like the videos, guys, please do subscribe and be a part of my channel. So without wasting any time, let's just begin this part. And before I begin, I would also like to inform you that ये जो documents मैं आपको बताने जाऊँगा, वो आपको documents अपने ध्यान रखना है कि आप अपने मेन सूटकेस वाले लगेज में ना रखें. ये documents आपको अपने हैंड बैग या अपने हैंड में एक फाइल रेडी करनी है और एक फाइल प्रिपेयर करके अपने हाथ में लेकर जाने हैं, क्योंकि ये documents ऑफिसर्स चेक करेंगे इंडिया में भी एंड इन कैनेडा. सो मे बी if you put these in your big suitcase or big luggage, and when you arrive in Canada and when the officers ask and you're unable to present these documents, you have a higher chance of getting deported back. So guys, please make sure you carry these documents in your handbag and not in your main suitcase luggage. Okay, let's begin the first part of the video. So I have created basically a list of all the documents and which I think are relevant and really important for you to carry at the airport. So at the end of the video, I will also post the list, and you guys maybe can screenshot it or pause and write it down if you find it useful. So the first document that you would be carrying as a student is your letter of acceptance. दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको कॉलेज से मिलता है जब आप कॉलेज में एक्सेप्ट हो जाते हैं, एंड यही डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं. तो ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको अपने हाथ में रखना है एंड आपको अपने हैंड बैग में कैरी करना है. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ओरिजिनल होना चाहिए स्कूल का. ये है जो ये इंडिया में भी ऑफिसर्स चेक करते हैं, और यही डॉक्यूमेंट कनाडा में भी ऑफिसर्स चेक करते हैं जब आप लैंड करते हो. The second document that you would be needing is your letter of introduction or your study permit. तो बेसिकली लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है? जब आपका स्टडी वीज़ा अप्रूव हो जाता है एंड इफ़ यू हैव अप्लाइड ऑनलाइन एंड इफ़ यू हैव अ जीसी की अकाउंट, तो आपको अप्रूवल की ईमेल आ जाती है आपके जीसी की अकाउंट पे. आपको लॉगिन करना है एंड आपको उसी ईमेल में, उसी अकाउंट में आपको आपका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन और पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर मिलेगा. तो बेसिकली दिस लेटर इज़ इक्वलेंट to your letter or your study permit, and it's not a study permit but it's equivalent to that. And once you arrive in Canada, this is the letter which the officer will see, and he will issue you a study permit over there. This is for all the new students, but if you're a returning student, then you already have your study permit or your work permit, and you would be easily able to travel with your study permit in hand.
तो तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आज के टाइम में है वो है आपका कोविड टेस्ट रिजल्ट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आफ्टर 7th of January Canada has announced that if you are looking to travel to Canada anytime soon you would need to do a PCR। तो guys ध्यान देना, PCR COVID test, and this test has to be done within 72 hours of your flight, and you need to carry a negative report physically in hand when you arrive at the airport, because the officers at the Indian airport or at the Canadian airport will be checking your COVID test result। तो ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अपने साथ कैरी करना है, एंड ये कोविड टेस्ट आपको 72 आवर्स फ्लाइट से पहले कराना है, लाइक मैक्सिमम 72 आवर्स पहले, उससे पहले नहीं। जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो आई थिंक बहुत कॉमन है और इट्स कॉमन सेंस दैट यू नीड टू कैरी योर पासपोर्ट विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। उसी में आपका वीज़ा है जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो फोर्थ डॉक्यूमेंट इज़ योर पासपोर्ट। The next document, which is also very important guys, it is your quarantine plan form। तो बेसिकली आप सब जानते हैं कि if you go to Canada you will need to quarantine for 14 days, and वो quarantine plan आप इंडिया से ही बुक करके जाएंगे। तो आप you can book it through BNB or anywhere private, and I will also be making a video on the quarantine plan in details showing how to prepare the plan, how to book it from India। So guys keep your notifications on, I will be making a video on that soon। तो आपको क्वारंटीन प्लान पूरा एक फॉर्म रेडी करना है एक शीट पे, एंड यू नीड टू कैरी द प्रूफ ऑफ योर बुकिंग विद यू व्हेन यू ट्रैवल टू कनाडा, क्योंकि ऑफिसर्स वहाँ कनाडा में ये पूरा चेक। ऑल्सो जो क्वारंटीन प्लान है आपका, उसमें आपको ध्यान देना है कि आप उसको रिटन में तो बनाएंगे ही, लेकिन आपको साथ में यू नीड टू प्रिपेयर इट वर्बली एज वेल। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू अराइव इन कनाडा द ऑफिसर माइट आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर क्वारंटीन प्लान, एंड यू नीड टू बी वर्बली prepared for that, not just in your documents। You can provide him your documents, but maybe the officers might ask you questions like so how would you do your groceries, how would you get this or that, and you need to be mentally prepared and verbally prepared। So I will be making a video of that as well, and when I make the part 2 I would be asking my sister about these questions as well, what did she answer and how did she manage। So guys keep subscribed, and ये verbally prepare करना है आपको, and जैसे आपसे ऑफिसर पूछेगा तो आपको उसको वर्बली भी पूरा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म बेसिकली आपको एयरपोर्ट पे ही मिलता है थ्रू द एयरलाइन यू ट्रैवलिंग। तो जो एयरलाइन है वो आपको बोर्ड करने से पहले ये फॉर्म देगी जो आपको फिल आउट करना है अपनी बेसिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन के बारे में, एंड यू नीड टू कीप दैट सेफ विद यू थ्रू आउट योर फ्लाइट, बिकॉज व्हेन यू अराइव इन कनाडा दे माइट आस्क यू फॉर दैट फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है एंड फिल आउट करना है केयरफुली। So next document है, basically it's not a document, it's the app which is called the ArriveCan app, which you have to download in your mobile phone, as you might have already heard। तो ये app it is mandatory for everyone to download and fill out your information। So when you fill out the information, basically what happens is you are sent a receipt on your email। तो आपको वो receipt संभाल के रखनी है, and at the airport if the officers ask you need to show your receipt of the ArriveCan app through your email। One major document which is really important, which I don't think many people talk about in the videos, is your health insurance। तो I know कि हम students हैं and we would prefer to get our health insurance from the school or from the college in which we are studying when we arrive to Canada। But guys after COVID, as we all know कि हमें 14 day quarantine भी करना है, तो उस period के लिए भी हमारे पास health insurance होना बहुत ज़रूरी है। तो from the day you will go to the day you will quarantine, it's around 14 or 15 days। तो उसके लिए भी आप प्लीज़ अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं इंडिया से ही, कनाडा का ही ले ऑनलाइन, लेकिन थ्रू इंडिया उसको बुक करा के जाएं, एंड उसकी भी एक रिसीट एंड कॉपी अपने हाथ में रखें, बिकॉज मे बी द ऑफिसर्स कैन डेफिनेटली आस्क यू अबाउट योर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द 14 day quarantine that you will be doing, because God forbid if something happens you definitely need your health insurance because the medical expenses are really high in Canada। ऑल्सो जो एक और डॉक्यूमेंट जो आपने ज़रूर कैरी करना है वो है आपका IELTS टेस्ट रिजल्ट। तो आपने बेसिकली IELTS दिया होगा, आप उसकी हार्ड कॉपी ज़रूर अपने साथ अपनी फाइल में कैरी करिए, बिकॉज समटाइम्स एट द एयरपोर्ट, एट द इंडियन एयरपोर्ट दे माइट आस्क फॉर योर IELTS रिजल्ट। बेसिकली उनको अलाउड नहीं है कि वो आपसे मांगे आप IELTS टेस्ट रिजल्ट, बट इवन दे माइट समटाइम्स आस्क यू, क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन आई ट्रैवल टू कनाडा दे डिड आस्क फॉर द हार्ड कॉपी ऑफ माई IELTS रिजल्ट। तो उसको भी आप अपनी फाइल में ध्यान से संभाल के रखें एज अ हार्ड कॉपी, बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक रिस्क्स एट द एयरपोर्ट। So this point is for those guys who applied in the SDS category for your study visa। So basically if you have applied in the SDS category, you might already know that you received a receipt of your GIC account of $10,000,
and also maybe you might have been issued a GIC certificate. I applied in the non-SCS category, so I don't have that. लेकिन अगर आपके पास है वो रिसीट एंड सर्टिफिकेट, तो आपको वो अपने हैंड बैग में ही कैरी करना है अपनी फाइल में, क्योंकि when you arrive in Canada, the officers can ask you about your proof of income or your source of income or source of funds and how you would be able to survive in Canada. तो आप कैसे करेंगे? तो आप अपनी वो GIC की रिसीट दिखा सकते हैं. आई थिंक यू कैन ऑल्सो कैरी अप टू $10,000 कैश, तो वो भी आप अपने सेफ में रख सकते हैं. यूजली दे डोंट चेक, बट $10,000 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो वो लेकर आप मत जाना. एंड यू कैन ऑल्सो वर्बली आंसर द सिक्योरिटी और द ऑफिसर्स, द इमिग्रेशन ऑफिसर्स, इफ दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर प्रूफ ऑफ फंड्स. तो आपको अपनी GIC की रिसीट दिखानी है, GIC का सर्टिफिकेट दिखाना है. मे बी अगर आप इंडिया से अपना बैंक अकाउंट खुलवा के जाते हैं, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं. इफ़ दे आस्क इन डिटेल्स, दे डोंट यूजुअली आस्क अबाउट दीज इन डिटेल्स, बट इफ दे आस्क, यू शुड बी प्रिपेयर्ड वर्बली. कैश यू कैन कैरी, आई थिंक, अप टू अ लिमिट ऑफ $10,000. And you can also bring your Forex card, which is really very important, as you won't be able to go out in quarantine, and the Forex card will be the only way through which you would be making your payments. So you can carry the Forex card as well. There's also a few things about quarantine which I would like to let you know, which not many people know about. So basically, when you arrive, you need to show the officer that your ability to quarantine for the 14 days, and that if your classes are going online, you would be doing the classes online in your quarantine, and you would only attend your physical classes if they're going on after the quarantine and not before that. Also, these quarantine rules are for those who are in every province of Canada except British Columbia, because according to the rules, you don't need to quarantine in British Columbia, but you do need the COVID test report if you're traveling to Canada in any province. Okay, this point is for those students जिनके उनके पेरेंट्स या उनके फैमिली मेम्बर उनको अकम्पनी करते हैं. तो गाइज मेक नोट की रूल्स क्या हैं, कि सिर्फ वन फैमिली मेम्बर ही अलाउड है आपको पर पर्सन. एंड ये वो भी उनके लिए बेसिकली, नंबर 1, इफ़ यू आर अ माइनर विच इज़ बिलो 18, आपको अपना फैमिली मेम्बर ले जाना अलाउड है, ओनली वन. एंड यू नीड टू प्रूव टू द ऑफिसर दैट येस, द फैमिली मेम्बर विल ओनली बी हेल्पिंग यू आउट टू मूव इन द न्यू प्लेस. Secondly, or he will be helping you out to meet your guardian, and he is not visiting for tourist purposes. Secondly, if you are not a minor, then you can only bring your family member, only one family member, only if you have a medical or a physical disorder, and you need to bring a proof of medical receipt showing that you have the disorder. And the family member does need to have his temporary resident visa to travel to Canada. Basically, you don't need any written authorization anymore. You just need to have your temporary resident visa, and you need to prove it to the officer that you're not traveling for any non-essential purpose. जैसा कि कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमें क्या कोई ट्रैवल लेटर उस कॉलेज से लेकर जाना है, कोई ऑथराइजेशन लेटर लेकर जाना है. नो, एज यू माइट ऑल नो कि आफ्टर 20th of October जिन कॉलेजेस का DLI फॉर कोविड प्लान अप्रूव्ड हो चुका है, वो स्टूडेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं. बेसिकली आपको जस्ट ये ऑफिसर को दिखाना है कि आपका जो कॉलेज है वो DLI अप्रूव्ड है फॉर द कोविड प्लान. एंड बेनिफिशियल ये होगा कि आप अपने कॉलेज से बात करें और उनसे एक लेटर ले भी लें इस बारे में कि हाँ, आपका ट्रैवल करना ज़रूरी है. इट्स नॉट मैंडेटरी और इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन जितने ज़्यादा स्कूल से डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. एंड गाइस, सिर्फ वही ट्रैवल करें जिनका कोविड प्लान स्कूल का अप्रूव्ड है. अगर आपको नहीं पता इस बारे में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट योर कॉलेज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. येस, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो. I do hope you find this video helpful and informative, and I hope this becomes useful for you. Also, I will be posting the list that I have made for you guys now, so you guys can maybe take a screenshot, or you guys want to pause and copy it down, so you guys can do it now. So this is the list of the documents that you would need. So guys, you can take a screenshot or note them down. Also, lastly, which when I mentioned about the family members, so this is the rules and the information about the family members, so you can copy this as well. लास्टली एक चीज और जो मैंने अपनी वीडियो में नहीं मेंशन करी, which is also really important, guys, prepare 2 files, not 1. So the first file would be for all the documents that you would need to present at the airport, and the other one would be the other file, which contains all the other documents which you won't need at the airport, but you would need them in Canada, which, like for example, your high school results, your college results, your job letter, etc., etc., and make them in a separate file, because you don't want that to be a big mess at the airport, or if you're lost at the airport between documents, so you wouldn't want that. तो इसलिए अपनी 2 फाइल्स तैयार रखना.
Alright, so that's it for today's video. I really hope you guys find this video helpful, and इस वीडियो ने आपके कई क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होंगे, आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिली होगी, and I hope you find this helpful again. And please do subscribe to my channel, please do leave a like, do comment down if you have any question, and I will make sure to get back to all of you. Also, I will be posting the part 2 really soon in 1 to 2 days after interviewing, and till then, as always, I'll see you guys in the next video. Bye.